Hello everyone. So let's take one more example. So here also same thing, find the rank of the matrix. Given matrix is over here, it is again 3 by 4 order of matrix. So maximum minors, minor means square matrix we have to take it again. So square maximum कौन सा लेंगे, 3 by 3 का ले सकते हैं, पॉसिबल है 3 by 3 का मैट्रिक्स हम ले लेंगे. तो मैंने यहाँ पे वापस ये फोर्थ कॉलम को मैंने कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे, और ये जो लेफ्ट ओवर दिस 3 by 3 मैट्रिक्स जो भी मुझे मिल रहा है दैट आई हैव टेकन इट, और उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. सो दैट आई विल बी फाइंडिंग. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, मतलब 50 minus by solving this I am getting this one. So if I simplify it I will get a 0 answer. So that means अगर एक भी माइनर की वैल्यू 0 आती है, so that will be we have to go one more level down. So since this is returning 0 value, तो मैं this I will not consider this as 3 won't be the rank of matrix, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट मैंने लिया हुआ है 3 by 3 का, दैट इज़ नॉट गिविंग मी एनी वैल्यू, इट इज़ गिविंग द 0 वैल्यू. सो नेक्स्ट स्टेप आई विल गो वन मोर लेवल डाउन. अब मैं कंसिडर करूँगी 2 by 2 का 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. यू कैन टेक एनी 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे ये ले सकते हैं, यू कैन फॉर्म दिस वन, यू कैन टेक दिस वन और दिस वन, एनीथिंग यू कैन टेक इट, बट द थिंग इज़ 2 by 2 यू शुड टेक इट. सो यहाँ पे मैंने जो लिया है, सो दिस मैट्रिक्स आई हैव टेकन इट हियर, उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया है. आई हैव टेकन दिस वन, दिस फर्स्ट वन आई हैव टेकन ओवर हियर. सो उसका डिटर्मिनेंट लेके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. सो आफ्टर डूइंग दैट आई एम गेटिंग -13 which is not equal to 0. And since I am getting non-zero values, so my rank of the given matrix will be 2, because this 2 by 2 जो order size का मैंने determinant लिया है, that is giving me the non-zero value, returning non-zero value. That's the reason rank of matrix, given matrix is 2. That's how we can find the rank of matrix by using minors. काफ़ी सिंपल है, यू डोंट हैव टू फाइंड ऑल द माइनर्स ओवर हियर. सारे माइनर्स को लेने की दैट इट्स नॉट एज रिक्वायर्ड. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ रिटर्निंग अ 0 वैल्यू और नॉन 0 वैल्यू. इफ़ इट इज़ रिटर्निंग अ 0 वैल्यू यू हैव टू गो वन मोर लेवल डाउन टू गेट द स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें नई वैल्यू 0 वैल्यू इट इज़ रिटर्निंग, देन जस्ट गो फॉर 2 by 2. It depends on what is given in the given matrix is of which order. From that you can start taking the minors. लेकिन starting में जो लेनी है वो maximum order का square matrix आपको लेना होगा when you are starting to solve it, and then go down depending on the what value it is returning. So this is the concept of minor, and that's how we can use it to see what is the rank of given matrix. So hopefully that is clear to you. Okay, this is now we will be solving the question which is from exam paper, and here the question is reduce the following matrix to its normal form and hence find the rank. So they ask you to find normal rank of the matrix. We have to find it, but they didn't specify you the method which we have to follow, like minor use करना है. As such there is no specific condition has been given. The only question is find the rank of the matrix, convert it to its normal form. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमें रैंक निकालनी है. नॉर्मल फॉर्म में जब भी हम कन्वर्ट करना है ऐसा, दैट वी हैव टू डू इट. what we have to do it, we have to try to convert the rows, try to see whether you can make any row as 0. So that would be the thing, and if it becomes possible, then number of non-zero rows will be giving you the rank of the matrix. I will show you with this example, so it will be clear. So first of all, what our intention is, we will try to make, if possible, it's any row to make 0.
तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़. So first of all I will try to take R2 minus R1. So why we are taking, because I am trying to see whether it can convert. I am trying to make any row as a 0. So यहाँ पे मैंने 0 लाने की कोशिश की है. That's why R2 minus R1. After doing this R2 के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, so सिर्फ R2 will get affected. सिर्फ R2 की वैल्यू चेंज हो रही है. R1 R3 are still intact. Now similarly यहाँ पे मैंने R3 minus 3 R1 किया है from the previous thing, on the previous matrix which I have received over there, so that I got, if you look here now I got two exactly same rows. दोनों rows की value, last two rows की value जो मुझे मिल चुकी है वो exactly same है. So now easily I can do it. I can subtract them and I can convert one row to 0. So R3 minus R2 मैंने किया हुआ है, सिर्फ R3 will get affected. So R3 से R2 अगर मैं subtract करती हूँ, so -2 वो प्लस हो जाएगा, then it will get cancelled. Similarly 3 minus 3 will get cancelled, 0 आ जाएगा. -2 plus or minus will become plus, so it will be 0. So R3 became 0 over here. First two rows remained intact. So now this is how I have converted the last row as it turned 0. After that what we can do it, I will see whether I can make any column as a 0. I will try maximum if any elements getting converted to 0. So यहाँ में मैंने column operation use किया है C4 minus C2. C4 के ऊपर हम operation कर रहे हैं, C4 से C2 subtract कर रहे हैं, means from this one we are subtracting C2 जो यहाँ पे C2 है, this one. So because I clearly see this, both the columns are exactly same. So if I will subtract it, easily I will get this one column 0. So that's what I have done it here. Similarly, if you see we have made one row, one column 0. So that's how we have to keep checking, keep trying how much we can make it 0. So C3 plus C1 I have done it. So only C3 will get affected here since I am doing operation on this one. So it turned to be 0 3 0. बाकी के सारे column जैसे वैसे रह जाएंगे. Now similarly I have applied a few operations so that I can make maximum elements 0. So finally what we have to come to the step that we have to get the matrix in the form of this one, means other than diagonal elements we are making all elements 0. If you see that, that's how we have attempted it. We can apply row transformation or you can apply any column transformation. It's up to you. It's not necessary you have to apply these only. जो भी मैंने अभी लगाया है ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही लगाएंगे. So not necessary. You can, if you find any other transformation that's more easy for you to apply any row transformation, you can use it. Any column transformation you find it easy to calculate, you can use it. It's nothing wrong. The only thing is calculation should be correct. And the intention or the goal is we have to make other than diagonal elements, we have to try to make other elements 0 other than diagonal elements, and that's what we have done it over here. तो कोशिश वही होनी चाहिए कि diagonal elements को हम 1 लाएं and other than diagonal elements को 0 लाएं. So for that reason I have applied C2 minus C1. Again I am saying you can apply any transformation, not necessary वही लगाना है. So that I have used it over here. So this is couple of transformation I have used here, C3 plus C2. So C3 सिर्फ change हो जाएगा, बाकी सारे columns will be remained as it is. Then finally C2 plus twice C3 I have applied over here. So this is after doing, finally I got this matrix, which if you see this is the only 2 by 2 like identity matrix we call it as. Only diagonal elements are 1. 2 by 2
identity matrix I got it, and other than that all columns and rows are becoming 0. Since this is the 2 by 2 matrix which is identity matrix which I received over here at the final step, so that's why we are saying rank of matrix is 2. अगर मुझे यहाँ पे 3 मिल चुका होता, मतलब if I would have got this one, अगर इस तरह से कुछ फाइनल आंसर मिल जाता था तो मुझे मेरा रैंक हो जाता था 3. So it depends on what you got in the final after making all the diagonal elements 1 and after making all non-diagonal elements 0. अगर जो भी आता है it depends on, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स what you will be writing. Since I have received here 2 by 2 identity matrix और बाकी के सारे रोज 0 हो चुके हैं, that's why I am saying that rank of matrix is 2. होपफुली इट इज़ क्लियर, क्योंकि आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर फ्री टू यूज़ अप्लाई एनी रो ट्रांसफॉर्मेशन, एनी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली सेम वे जो जैसे भी आप करते थे 12 तक, सेम वे से करना है. देयर इज़ नो चेंज इन दिस एट ऑल. और यहाँ पे कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि इसी मेथड को आपको रेफ़र करना है, नहीं बताया ऐसे कुछ. सो यू कैन use normal row or column transformation which you are comfortable with, and सिर्फ आपको लाना है कि वो मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है. डायगोनल एलिमेंट्स 1 आने चाहिए, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स 0 आने चाहिए, एंड that should be your goal, and once you get that then you will get your rank of the matrix. This is how we can use फर्स्ट हमने देखा इसमें हाउ टू यूज़ माइनर्स टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और विदाउट माइनर्स ऑल्सो वी कैन फाइंड इट. इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से जाना है. होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. ओनली द कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट. थैंक यू.